Good morning to all of the students. So we are continuing about the last lectures. So we are on the chapter number 2nd. You know very well work and the energy. So now we will discuss about the work. We will discuss about the work on page number 22 and about the energy. Work already we completed. Now we will discuss about the energy. Why does it happens? You have seen if you are putting a plant in a dark room, and after a few days or 1 or 2 days or in the evening you will observe the plant will languish, means the plant whatever the leaves are totally out. होता ना, जब प्लांट होता है ना, कोई पॉटेड प्लांट है, अगर डार्क रूम में रखेंगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे, इवनिंग तक या बोलते हैं ना 1-2 दिन बाद ये प्लांट पूरा लैंग्वेज हो जाएगा. यू हैव सीन इन डे टू डे लाइफ व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द टीवी वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक सिस्टम्स, ऑल द वाइब्रेटिंग मीन्स वॉट एवर द यूटेंसिल्स इन योर हाउस इट इज़ वाइब्रेटिंग. जो तुम्हारे घर में अगर बोलते हैं ना टीवी सिस्टम से या म्यूज़िक सिस्टम से अगर उसका हाउस बोलते हैं ना, हाउस बोलते हैं ना, उसका वॉइस इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, पूरे वॉइस से बोलते हैं ना जो यूटेंसिल्स रहते हैं वो क्या होते हैं, वाइब्रेटिंग होने लगते हैं. डिपेंडिंग वॉट एवर द वेसल्स आर द यूटेंसिल्स आर द दैट लाइक एन अ वाइब्रेटिंग टाइम. एंड सम ऑफ द टाइम फ्यू ऑफ द यूटेंसिल्स फॉलिंग ऑल्सो. इट डिपेंड ऑन द म्यूजिक सिस्टम हाउ मच द साउंड इज देयर. Now collecting with sunlights on a paper in day-to-day life, you have seen the small children are playing. They are taking a convex lens, and from the convex lens they are playing. The paper they are taking and the sunlight are passing from the convex lens. You are observing that paper are burning. Paper क्या हो जाता है, burn हो जाता है. तो whatever the capacity to do a work that we are telling as an energy. Whatever the capacity to perform a work, to do a work, बोलते हैं ना जो कैपेसिटी what we are doing a certain kind of the work that we are telling as an energy. जो कैपेसिटी रहती है कोई भी चीज़ को परफॉर्म करने की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी. नाउ इट डिपेंड हाउ मच वर्क यू आर परफॉर्मिंग, दैट डिपेंड ऑन द एनर्जी. नाउ यूनिट ऑफ वर्क वी आर टेलिंग एज एन सेम एज एन एनर्जी. नाउ वॉट एवर द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी बोथ आर सेम. तो ये ऐसा यूनिट इज जूल एंड एनर्जी CGS इज़ वॉट अर्क. एनर्जी बोलते हैं ना, वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट क्या है, सेम है. तो ऐसा यूनिट ऑफ जूल इज़ वॉट, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ ऑल्सो जूल एंड CGS इज़ अर्क. रिमेंबर वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट सेम ही है. तो एनर्जी की यूनिट बोलते हैं ना, ऐसा यूनिट में जूल आएगी और CGS में अर्क आएगी. नाउ वी हैव सीन इन डे टू डे लाइफ देयर इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ द एनर्जी आर देयर. मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल, न्यूक्लियर, सोलार. All this kind of the energy we have seen in day-to-day life. Mechanical energy with the help of the machine, heat energy, some kind of the things you are burning, light energy from the sunlight, sound energy, like how music systems are there. Electromagnetic with the help of the magnet or electricity, how the magnetic energy are changing. Chemical energy with the help of the chemical, nuclear energy if you will go, or some kind of the chemicals are there with the help of that nuclear energy are there. And then the solar energy with the help of the sunlight. Now we will study the mechanical energy here. Mechanical energy of the two type, potential energy and the kinetic energy. First, kinetic energy. Now just see an example. The first cricket ball strike the stumps. You know, whenever the bowlers are bowling and directly hitting to the stumps, what you will observe, the ball are moving and hitting the stumps. This kind of the things देखते हैं ना, बॉलर्स बॉलिंग करता है और डायरेक्टली क्या करता है, डायरेक्ट बोलते हैं ना, इट माइट बी बैट्समैन मिस करता है तो डायरेक्टली क्या करेगा, जाके स्टम्प्स पे लगने वाला है. द बैट्समैन the batsman will miss the ball and what happen, the ball will directly hit to the stumps depending on the bowler. Now the striker hit on a coin on the carom boards. You are playing the carom board, you have seen when you are striking with the help of the striker and the striker hit the coin is moving, and the striker first when you are hitting the striker is also moving, and when hitting the coin is also moving. One marble strikes another in a game of the marbles. You have seen the marble striker. The marble strike is that the small marbles are there. So game of the marble, you know, we are hitting one to the another in day-to-day life. All of you are playing marbles game. One of the marble you are hitting to the another marble, directly hitting it. तो फ्रॉम दिस यू विल ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रहता है मूव होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में. दिस काइंड ऑफ द एनर्जी वी आर टेलिंग एज एन व्हाट, काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, फास्ट बॉलर बॉल कर रहा है,
तो डायरेक्टली बॉल जाके स्टंप पे लग रहा है तो बॉल मूव हो रहा है। कैरम पे जो स्ट्राइकर हिट कर रहा है कॉइन पे तो कॉइन भी क्या हो रही है, मूव हो रही है। द मार्बल यू आर थ्रोइंग इट एंड हिटिंग टू द अनदर मार्बल, द बोथ द मार्बल आर मूविंग व्हेन हिटिंग टू द ईच अदर। तो यह इज एन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। दिस मूविंग ऑब्जेक्ट हैज सम काइंड ऑफ द एनर्जी। तो विद दिस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आर ऑल्सो मूविंग। जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है यहाँ पर। तो दिस ऑब्जेक्ट वी आर टेलिंग एज एन काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज़ द बिकॉज ऑफ द मोशन, वेन एवर द एनर्जी फ्रॉम दैट एनर्जी द ऑब्जेक्ट आर कमिंग इन मोशन, दिस काइंड ऑफ द एनर्जी वी आर टेलिंग एज एन काइनेटिक एनर्जी। जो बोलते हैं जो एनर्जी से जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो मूव हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो इस काइंड ऑफ ये एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। दिस काइंड ऑफ द एनर्जी वी आर टेलिंग एज एन काइनेटिक एनर्जी। द वर्क डन बाय अ फोर्स टू डिस्प्लेस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, वॉट एवर द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आर देयर, when we are performing some kind of the work to move the stationary object, it depend on the object how much distance that will cover. The certain kind of the things you know very well when you are moving from one place to the another place. When you are pushing some kind of the stationary object to the certain place at a certain distance, this we are telling as a kinetic energy. And how much object is there, हाउ मच एनर्जी इज़ देयर, इट डिपेंड ऑन इट। मतलब एनर्जी कितनी है तो जितना डिस्टेंस कवर करेगी, इट डिपेंड ऑन द एनर्जी हाउ मच स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विल मूव एंड हाउ मच डिस्टेंस विल कवर। बोलते हैं ना जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तुम लोग कितनी ऑब्जेक्ट एनर्जी लगाओगे और कितना वर्क परफॉर्म कर सकते हो वो डिस्टेंस मूव करने में, मीन्स कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है। दिस काइंड ऑफ द एनर्जी वी आर टेलिंग एज एन काइनेटिक एनर्जी। नाउ वी विल से एज एन काइनेटिक एनर्जी दैट इज वर्क डन। Work done is what? Force into displacement. Force into displacement, and force I already told you that is mass into acceleration. Here displacement is coming. How much distance it is covered? How much distance that has been covered on applying the force. So yeah, expression for kinetic energy. How kinetic energy we will get? Whatever the stationary object has a mass m, and how much force you are applying. एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, फोर्स को f लेते हैं। तो ना u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इज इन द ऑब्जेक्ट दैट इज इन नॉट इन मोशन स्टेज, वी कैन से इट इज इन अ सेम प्लेस दैट इज नॉट इन अ मूविंग पोजिशंस, स्टेशनरी पोजिशंस वी आर टेलिंग दैट स्टेशनरी पोजिशन ऑलवेज विल बी अ जीरो, दैट इज u इक्वल टू जीरो। नाउ व्हेन यू विल अप्लाई द फोर्स, what you will observe, the stationary object will move from one place to the another place when you are applying the force, that u will change into v. This generate an acceleration a in the object, and after some time whatever the object, the acceleration will be there, the acceleration will be a, the time it will cover, that time we are telling as in a t. Now the initial velocity has in moving positions, so as already told you, when the object is in a stationary it is u, but when it will move the u will change into v. The displacement as an s, so you will observe work done equal to what? Force into displacement. According to Newton's second law, that is momentum, we are telling force equal to mass into acceleration. But you know the distance is what? Ut plus half at square, but u is in the initial position, so u will become 0. So you will observe 0 into the 0, the s will become only half at square. S will become only half at square. Now we know the formula of work done, that is force into displacement. Force we have mass into acceleration, displacement we have half into at square. So now you will multiply. What you will observe, that is half into m. Half into m. A is what? A square and t square. So they written as an at the whole square. At the whole square. Now we know the formula of Newton's first law, that is in the initial condition, v equal to u plus at. Now again u is 0, so we will put a 0 in u place, so you will get v equal to 0 plus at, that is v equal to 80. Now just do a square, that is v square equal to 80 the whole square. Now in the third equation you will see how we written w equal to half m 80 the whole square. In place of the 80 the whole square we will put what? V square. So you will get there's a work done equal to what? Half mv square. But this work done is in a kinetic form, that is in a moving form. So w we will replace as in a ke.
Kinetic energy by an object is the amount of the done by the work. Now here the kinetic energy we are telling is in a work form, is in a moving positions. So this work will change into the kinetic energy. So instead for W we will write as in a Ke. So Ke equal to half mv square. The Ke equal to half mv square. Now potential energy. Potential energy you will see what they given. An arrow is a stretch from a stretch bow. A simple an example, the stone is kept in some position on the ground, that is not in a moving positions. The stone will move, you will observe it is not in the moving position. In the same manner they are telling an arrow is released from a stretch bow. The arrow is releasing and hit to the target and it will stable there, it will in the rest positions. Water kept at a height flow through a pipe into the tap below. Whatever the water is stored in a certain height. डैम का वाटर देख लीजिए तुम लोग, तो डैम के वाटर में एक सर्टन हाइट तक रहता है वाटर, वहाँ पे स्टोर्ड रहता है. अ कॉम्प्रेस स्प्रिंग इज रिलीज्ड. वॉट एवर द कॉम्प्रेसिंग स्प्रिंग आर देयर. स्प्रिंग देखते हो तुम लोग दबा के रखते हो, तुम लोग ऑब्जर्व करोगे, जब रिलीज़ करोगे तो मूव होगी, बाद में फिर से स्टेबल आ जाएगी. तो दिस काइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस काइंड ऑफ द एग्जाम्पल यू विल ऑब्जर्व द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कम फ्रॉम. ये जो बोलते हैं ना एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है जिससे तुम्हारा मोशन हो सकता है ऑब्जेक्ट का. इफ़ द ऑब्जेक्ट वे आर नॉट ब्रॉट इन द स्टेट्स, वॉट एवर द ऑब्जेक्ट दे आर टेलिंग नॉट कमिंग इन दैट स्टेट मीन्स वुड दे हैव मूव, वो मूव हो सकते थे. एरो को एक ही जगह पे बोलते हैं ना स्टेबल करके रखो. वाटर जो हाइट पे है उसको वहाँ पे ही रुका के रखो. डैम वाटर स्टेट एट द सर्टन हाइट मीन्स डेट डज नॉट फॉल. डेट डज नॉट फॉल means it will be in the same height, not flowing in the positions. A compressed spring, just press the spring on the same positions, does not move. So what you will observe, this kind of the example we are telling as a potential energy. Or simple an example, just see, just put a stone on a height or pen on some of the benches. You will observe after 1 day, 2 days, it will not release, it will not move, it will stable in the same positions. It will stable in the same positions. This kind we are telling as a potential energy. Now hold a chalk at a height of 5 cm they are telling from the floor and release it. What by holding a chalk, or just instead of a chalk just hold a pen and just release. When it will come down again it will in the stable condition, stationary positions. First you are releasing means first you are holding, that is not moving positions. But when you are releasing it is in a moving. So moving means it is kinetic energy. But when it will come on the ground, what you will observe on the ground again it will be in the stable positions. Now stand up straight and then release the chalk. बताया पहले होल्ड अ chalk करो 5 cm तक and then release the chalk. Straight होकर and release करो, then release it. Is there a difference in the result of the two activity? If so, why? क्या डिफरेंस है? पहले होल्ड चॉक करो 5 cm फ्रॉम द फ्लोर और बाद में रिलीज़ करो. एंड सेकेंड दे आर टेलिंग नाउ जस्ट स्टैंड इट एंड देन रिलीज इट. इफ सो वाई. नाउ एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सॉरी. Potential energy we are telling just mass as an whatever the object you are carrying as an chalk that is a mass m, you are releasing from certain height 5 cm. The 5 cm is also height as an h about the earth's surface. Now force we know that is mass into acceleration. Now your force is in a certain kind of the object, so that is mg will come here, not ma. Not ma, here mg will come. A and g is the same thing, but acceleration due to gravity and just g. Now the chalk is the non-living object, remember, has to be used against the direction of the gravitational force. This whatever the force to be mg has to use, बोलते हैं अपने को यूज़ करना है इसको ग्रेविटेशनल फोर्स में. तो वॉट एवर द अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन इज वॉट दे आर टेलिंग अगेन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. नाउ फोर्स इज वॉट m into g. Force they are telling is in a same mg and displacement is h here because of the h. Earlier that was distance. काइनेटिक एनर्जी में डिस्टेंस था तो हम लोग ने s लिए थे, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो ये हाइट आई है. तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, वर्क डन इक्वल टू mgh. So the amount of work done stored in object because of the displacement, whatever the amount of the work,
that earlier the amount of the work in the kinetic energy is in the moving positions, kinetic energy में moving position में था, but now the work done is in a stored positions. यहाँ पे work done कहाँ पे तुम्हारा एक stored positions में है because of the displacement. तो here potential energy equal to mgh, w equal to pe. तो now we will replace by p because object is in a stored positions. ऊपर क्या था, हम लोग ने ke किया था, वो मूविंग पोजीशन में था काइनेटिक एनर्जी में, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मूविंग पोजीशन में, सॉरी स्टोर्ड पोजीशन में है. तो जो भी ऑब्जेक्ट स्टोर्ड पोजीशन में रहेगा तो वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज P mgh. Simple an example, when you are in your house, the off fan, you will observe the blade fan is not rotating, it is in an initial position. फैन की ब्लेड ऐसे ही रहेगी. टेबल फैन का एग्जांपल देख लो या सीलिंग फैन का एग्जांपल देख लो, वो ऐसे ही स्टोर्ड में ही रहता है जब तक उस पर एयर नहीं आएगी. और व्हेन यू आर ऑनिंग द बटन देन इट विल मूव इन द काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. डिस्प्लेसमेंट टू हाइट एज causes एनर्जी इक्वल टू mgs एंड स्टोर्ड टू बी ऑब्जेक्ट. बोलते ना जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइट है वो क्या होगा, mgh में आ जाएगा एंड देन टू बी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट. We will discuss this topic later on, transformation of the energy, on the next topic.